My Duke won't start. Hello guys, I'm back with my another video. So as you can see, just today I received my parcel from Rhinox. Now ये चीज़ मैंने ऑर्डर किया था आई गेस लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट होने पे एक दिन पहले ऐसे कुछ तो एंड फाइनली टुडे आई रिसीव्ड इट. नाउ मैं सारे जितने भी मेरे चीज़ें थे जितने भी प्रोडक्ट्स आने वाले थे सबका वीडियो साथ में बनाने वाला था, लेकिन जो मेरे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं बाइक के पार्ट्स वगैरह उसको आने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और आई एम अ क्यूरियस सोल. तो मैं सोचा इस चीज़ को इसी वीडियो में ओपन कर लेते हैं. तब तक मेरे को मेरे ड्यूक का भी काम याद आ गया तो मैं बोला ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में कर लेंगे. सो इट्स बेटर. या जस्ट ओपन इट एंड या इट्स प्रिपरेशन फॉर लद्दाख बट आई डोंट नो इट्स लद्दाख गोना हैपन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. लेट्स सी. वी विल बी प्रिपेयर्ड. हमारी बाइक्स प्रिपेयर करके रखेंगे. जाने के डिसीजन तो लास्ट मोमेंट भी ले सकते हैं फिर. या लेट्स ओपन इट. बाय द वे दिस इज माय राइडिंग पैंट्स. Here you go, my Rhinox. कौन सा है ये? Stealth Evo राइडिंग पैंट्स. और ये मेरा जो राइडिंग जैकेट मैंने नया लिया था उसी का मतलब पैर उसी का काइंड ऑफ ये है. सो या as always Rhinox gear looks awesome and now let me just take out my favorite part which is like all of the stickers and all the stuff I really like. Oh, they've also given something like this. Now I have to also register it for warranty. Here's my all the stickers and stuff. So yeah, now let's go downstairs. Garage में जाते हैं और मेरे ड्यूक का काम करते हैं because my Duke won't start. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी को बिल्कुल भी पावर नहीं है. इतना भी नहीं कि डिस्प्ले ऑन हो सके तो बैटरी चेंज करना ही पड़ेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल बी ऑल्सो क्लीनिंग माई चेन एंड ल्यूबिंग इट. सो गाइस लेट्स फर्स्ट स्टार्ट ऑफ बाय क्लीनिंग द चेन. मैं आज बाइक वॉश भी करने वाला है. उसके लिए मैं ब्रश बाद में अप्लाई करूँगा. पहले चेन ल्यूब नहीं चेन क्लीनर स्प्रे कर दूँगा. उसके बाद उसको ब्रश से घिसूँगा फिर वॉश करूँगा चेन को. सो या लेट्स डू इट. बैटरी लास्ट में चेंज करेंगे. सो गाइज जैसे कि आपने देखा बाइक और चेन क्लीन तो हो गई है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई विल बी अप्लाइंग इज दिस मल्टीपर्पज पेनिट्रेटिंग ल्यूब. बाय द वे गाइज मैं जो पूरा सेट यूज़ कर रहा हूँ दैट्स फ्रॉम मैक्सिमा रेसिंग ऑयल. सो लेट्स अप्लाई दिस. Now guys after that multi-purpose lube finally I will be applying the chain wax. So let's do it. Now as you can see this is slightly golden in color. Now इस चेन पे ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरा जो चेन है थोड़ा ब्लैक ऑलरेडी हो गया है. दैट्स बिकॉज जब मैंने स्प्रॉकेट चेंज किया था तब मैंने ये
चेन चेंज नहीं किया था क्योंकि मेरा जो स्प्रॉकेट है वो मतलब OEM वाला नहीं है, मैंने थर्ड पार्टी लिया था। लेकिन जब ये ल्यूब मेरे टाइगर के चेन पे जाता है तो उस पर गोल्डननेस जो है अच्छे से समझ में आती है। एंड दैट्स इट फॉर द चेन रूटीन। नाउ गाइस, जैसे कि आपने देखा मेरा चेन ल्यूब और सब मतलब क्लीन और ल्यूब सब कुछ हो गया है, बाइक भी क्लीन हो गई है। नाउ लेट्स चेंज इट्स बैटरी। तो सबसे पहले दोनों सीट्स निकाल लेते हैं। So guys, this is my stock battery from Exide. Now let me show you the battery which I'll be installing now. So guys, the battery which I'll be installing in my bike now is from Amco. So let's install it. Here's the battery. So guys, my battery has been installed. Now let's start the bike. Yes. बहुत गर्मी थी बाहर, बट फाइनली बाइक का पूरा काम हो गया है। बाइक स्टार्ट हो गई, अभी अच्छी लग रही है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट, सिंपल एंड बाइक रिलेटेड वीडियो। मैनी मोर टू कम, क्योंकि मेरे सारे पार्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे जैसे आ जाएंगे तो वीडियोस बनते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, देन क्लिक हियर टू सब्सक्राइब एंड क्लिक हियर टू सी माय लास्ट वीडियो, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.